family. So today's shout outs are in middle of the video, so let's watch the full video. So first of all we have to take this bowl, and next ingredient is Ezee liquid detergent. So take this, and this is very cheap in rate, in only 5 rupees. You can buy it from near of your shops. So let's take it and cut it with the knife or any scissor and take out in the bowl. So I will take only half of the pouch, not full. So take only half of the pouch. So this is our Ezee liquid detergent. So next is कलर. तो हम यहाँ पर एक्रिलिक कलर मिला रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आज ग्रीन कलर यूज़ करने वाली हूँ. तो आप यहाँ पर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, विच एवर इज़ योर फेवरेट. सो लेट्स टेक लिटिल बिट ऑफ द ग्रीन कलर and mix it with the Ezee liquid detergent. Let's take the next ingredient, that is the glue. So you can take any fairy gum also. I'm taking here the clear glue. So let's mix it with these all the liquids. So on the screen you are looking my second channel, Irene Star DIY. So please subscribe at this channel also. Please hit the bell icon. So this is my Irene Star DIY channel. So in this channel I am making the videos of DIY, slimes and slime ASMR, satisfying videos of slime and many more slime videos here also I am making, and for DIY. So इस टाइप के videos आपको इस channel पर मिलते रहेंगे. So for slimes also, for DIY also, you can subscribe at this channel also. So please subscribe and please support me, and I know my YouTube family will support me. So please support. So now let's take the activator. So add some activator, borax activator or any other boric acid activator. So you can add it here little bit until it becomes the non-sticky.
लास्ट बार हमने यहाँ पर एक्टिवेटर मिक्स कर दिया है। सो नाउ मिक्स इट। सो ये देखिए यहाँ पर स्लाइम प्रिपेयर हो रहा है, बट ये नॉन स्टिकी नहीं हुआ है। तो इसके लिए अब हमें इसे फ्रीज़र में रखना है। तो फ्रीज़र में हम इसे हाफ एन आवर के लिए पुट कर देंगे। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को इसे फ्रीज़ में नहीं, फ्रीज़र में रखना है, ओनली फॉर हाफ एन आवर। सो लेट्स पुट इट। So here are your shoutouts names. So all of you, thanks for supporting me, and who are new to my channel, please subscribe my channel and please subscribe my Irony Star DIY also. So take out from the fridge. So this is our slime जो हमने फ्रिज में रखा था। तो ये हाफ साइड से थोड़ा सा आइस जम गया है उसमें, एंड हाफ साइड से हमारा स्लाइम प्रिपेयर हो चुका है। लुक एट दिस। तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, जिससे ये जो हमारा बर्फ जमा हुआ है ना, ये आप देख सकते हैं, मैं फिंगर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे पूरा स्लाइम उठा लेते हैं, हाथ में इसे स्ट्रेच करते हैं। सो लुक एट दिस। फ्रीज़र में रखने के बाद हमारा स्लाइम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। देखते हैं ये कितना स्ट्रेची हुआ है। सो लुक एट दिस फ्रेंड्स। ये स्ट्रेची तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, बट लिटिल बिट हल्का हल्का सा स्टिकी है, बट कोई बात नहीं। दिस इज अवर स्लाइम एंड इट इज प्रिपेयर्ड। सो आई होप यू लाइक ऑल दिस वीडियो। सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Please share this video, please like the video, please click on the like button also. So look at this. This is our slime and it is very prepared, and this is very stretchy, but little bit it is sticky, but I hope you like it and try it at your home. Enjoy this video. प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर आयरनी स्टार DIY सर्च करिए एंड उसे सब्सक्राइब करिए। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, बस यही आईडी आपको जाकर के सर्च करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।